YouTube. Yes, I do put it on YouTube and I do share it, and it's public and it's not private. Yeah, but we can always share our thoughts and our feelings. And if you are feeling something, which is at a very deep level, and you feel that it's not safe in sharing in public, you can always ask me on my WhatsApp. You can ask a personal question. At the same time, I do give one personal free coaching session, first 60 minutes, first 1 hour coaching session free to everyone. So whoever chooses to take that opportunity and connect with me for any situation, it can be health, it can be finances, it can be relationships, it can be anything. And I do really give personal sessions. Please, I request all of you to keep yourself on mute and let's begin with our session. So, why are we here? We are here for Friday Fiesta. And what is Friday Fiesta? So, double मजा है और नो दाम फ्राइडे फिएस्टा जिसका नाम प्रेम और मस्ती खुद के साथ, प्रेम और मस्ती श्रेया के साथ, प्रेम और मस्ती सबके साथ, प्रेम और मस्ती खुद के साथ, प्रेम और मस्ती सबके साथ. Friday Fiesta on up. And what are we doing in this Friday Fiesta? We are becoming like a child. We are again reliving our childhood. Of course, हम थोड़ी बहुत गपशप भी कर लेते हैं और कभी कभार सीरियस गपशप भी कर लेते हैं. But वो सीरियस गपशप के बाद अगेन हम वो बच्चे जरूर बन जाते हैं. एंड वो बच्चे करते क्या है? सो मैं भी हूँ मस्ती में, तुम भी हो मस्ती में, मैं भी हूँ मस्ती में, तुम भी हो मस्ती में. आओ सब मिलके करें मस्ती 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 मस्ती. आओ सब मिलके करें मस्ती and मस्ती. And so welcome to all of you. Somebody wrote something. मैं कौन सा बुक रखने के लिए कहा है? तो हमने कहा है कि आप एक अपना रफ बुक लिखिएगा, क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ तो आप उसको लिख सकते हो. आप चैट बॉक्स में अगर लिख सकते हो तो चैट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम उस पर बात कर सके, कॉन्वर्सेशंस कर सके, हम आपको जान सके. एट द सेम टाइम यू कैन जस्ट राइट डाउन योर पॉइंट्स, व्हाटएवर यू clicks to you, whatever you feel that, oh wow, this is the one I would like to practice in my life. So you can have your journal, your book, wherever you are writing. So I request all of you that if you all can really switch on your videos, that will be great, so that it is great to connect. Yeah. Why Bhagwan uncle is not coming? Karina is asking. Karina, Bhagwan uncle is on a Europe trip, and his timings are very different than this. So maybe he is having midnights at this time, and that's the reason Bhagwan uncle is not coming for past few sessions. But maybe maybe my next Friday he will be here. Maybe I'm not sure about it, because I'm not knowing his exact schedules. But that is what I'm aware, that he's enjoying his holiday. So, and that is giving us an opportunity. Please, when you join the meeting, please mute yourself. So that is giving us the more opportunity and more time to go within. Of course, we are missing his laughter time. And yeah, but so kya aap sab hai taiyar change ke liye? Today, what is the topic? That what is it that we are not ready for the change? Are we ready for the change? And if we are not ready, why so? Why is that we are not open for the change? So first of all, I would like to ask all of you a basic question, that what does change mean to you? आपको जब बदलाव के बारे में बताया जाता है, so what does it mean to you? What energy does it? खाना हो गया? What energies? Yeah, I am telling people, please, all of you, I request all of you. भगवान अंकल तो यूरोप ट्रिप में भगवान अंकल तो यूरोप ट्रिप में गए हैं. हाँ, भगवान अंकल यूरोप ट्रिप में गए हैं. I request all of you that please mute yourself, so that we can hear and we can have a proper profound conversations and deep conversations. रेडमी तो ऐसे अमिताभ बच्चन की तरह लग रहा है एकदम. वापस उन्होंने वीडियो तो बंद कर दिया, बट ही वाज लुकिंग लाइक अमिताभ बच्चन. आई थॉट, अरे वाह, हमारे सेशन में अमिताभ बच्चन कहाँ से आ गए? देयर इज समवन हु इज विद नेम रेड. Okay. So
what we were talking about, what are the energies we are carrying with our with the word change? I would like to know from all of you that what is it? What is it? I want all of you to reflect upon it. या सुरेश जी आप कुछ बताना चाहेंगे, आप कुछ चैट बॉक्स में लिखना चाहेंगे? When we talk about change, क्या दिमाग में क्या ख्याल आते हैं, क्या इमोशंस आती है, कैसा लगता है हमें? वो तो हंस रहे हैं कि चेंज के नाम से मैं तो हंसूंगा, अच्छी बात है, हंसो एंड वेलकम करो चेंज को, ब्यूटीफुल, ग्रेट। क्या मैं करें? बोल या करीना प्लीज। मेरे को लगता है चेंज मीन्स मतलब आप जिस भी सिचुएशन में हो उसमें मतलब इमोशनली मत बहो, मतलब जो आप करते आए हो लाइक उससे कुछ हट के लाइक एक्सेप्टेंस में आ जाओ। Okay. No, but I'm just saying that just a word change. हमें सिर्फ अपनी बात करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी और की बात नहीं करनी, मेरी अपनी खुद की बात करनी है। जब मुझे कोई ऑल ऑफ अ सडन बोलता है कि कम ऑन श्रेया यू हैव टू चेंज and change, there now the change is required. So what is the first impact the word change brings? What is that first impact? What is the first emotion? What is the first thought? It is that I'm not good enough. That's why you're asking me to change. Yes, so beautiful that you are. Who said that? Anjali. Anjali, thank you for sharing that. Yeah. नहीं मैं हाँ मैं चाहती हूँ चेंज होना, पर चेंज नहीं हो पाती हूँ, तो मेरे लिए कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है। मैं चाय छोड़ना चाहती हूँ, नहीं होता है। मैं जो चाहती हूँ वो नहीं कर पाती हूँ, तो मैं चेंज कैसे करूँ? मैं आपका मदद चाहती हूँ। Okay, great. I'm so Seems to me happy. like this. माई इनर प्रॉब्लम, माई बहुत दिनों से का प्रॉब्लम आपने आज उठा दिया। Oh, okay, great. तो आप कब से चेंज होना चाहते थे, बदलना चाहते थे, लेकिन बदल बहुत नहीं दिनों पा से, रहे थे, हाँ। और आज हमने वही टॉपिक पे बात कर ली और वही टॉपिक हमने छेड़ लिया। और कई लोगों ने कुछ कहा, मेरे ख्याल से मेरा चैट दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, चेंज इज कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड क्रिएट एंड अलाउ द न्यू. Amrita is talking about change is uncertainty. Kiran Alfonso says that don't want to change. Yes, we all don't want to change. And Pimsu says that fear and discomfort. Beautiful. And so, जब भी कोई, जैसे मुझे पता नहीं यहाँ पे किसी ने तो शेयर किया कि जब भी कोई मुझे बोलता है कि come on Shreya, you have to change your approach, change your behavior. If somebody is telling me that, what the first impact comes to me, oh, is there something wrong in me? Oh, am I not good enough? Am I not capable enough? And the first impact, when someone is telling all of us, the first impact starts with that, isn't it? नहीं तो क्यों हमें कोई बदलाव के लिए बात कहेंगे? तो और आप अगर ये सोचोगे तो उसके गहरे रूट्स कहाँ पर है? इसके गहरे रूट्स है हमारे बचपन में, isn't it? कितनी बार हमारे स्कूल के टीचर्स ने हमें बोला होगा और डांटा होगा कि कम ऑन, यू हैव टू चेंज, you can't behave this way, you can't sit this way, you can't write this way, you have to change your handwriting, you are very slow, you have to change this, and mothers and parents are telling us, come on, you are very lazy, you have to change, you can't just behave with this. And yes, the change, every time we are listening from change from childhood, what are the impressions we have from childhood? That you're not okay just the way you are. Exactly. That you are not okay just the way you are. You are not acceptable just the way you are. You are not approachable, or you are not approved just the way you are. And that's the reason we are right from childhood, where so often we are told that you have to be changed, you have to change, you have to change here, you have to change here, you have to change here. Mothers कहती है बड़ी होके ऐसा करेगी, बड़े लोगों के सामने ऐसे बात करेगी, ससुराल जाएगी तो ऐसे बात करेगी. So there is constantly, what is it? With the word, what is our brain, what is our programming in the subconscious mind?
In the subconscious mind, for most of us, the programming is of fear, uncertainty. At the same time, I am not acceptable just the way I am. And that is the biggest threat to our identity. And because of that biggest threat to my identity, what happens? Now I have to, what I have to do? इधर मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा डर है मेरी आइडेंटिटी के लिए, मेरे एग्जिस्टेंस के लिए, क्योंकि बार बार मुझे बताया जा रहा है कि ये आपका ये बिहेवियर जायज नहीं है, आपको बदलना है. सो बार बार जब मुझे अलग अलग जगह से, सोसाइटी से, फ्रेंड्स से, टीचर्स से, पेरेंट्स से, बचपन से अगर मुझे ये मेरे अंदर ये डाला जा रहा है कि मुझे बदलना पड़ेगा, एंड आई एम नॉट राइट एंड इट्स माय फॉल्ट, और वेयर एवर समवेयर आई एम रॉन्ग, सो कॉन्स्टेंटली I was focused on the wrongness of my whole behavior from childhood. So the subconscious mind got a message that Shreya, you are not right the way you are. Shreya, you are not acceptable just the way you are. Shreya, you are not approved just the way you are. And because of that हमारे सबके अंदर एक डर भरा हुआ है कि मुझे अगर यह सोसाइटी में रहना है, मुझे अगर ये सोसाइटी में प्रेम पाना है, मुझे अगर ये सोसाइटी में रिस्पेक्ट पाना है, मुझे अगर ये सोसाइटी में बीइंग वैल्यूड फील करना है, देन मुझे बदलना पड़ेगा, अदरवाइज द रिजल्ट्स आर अदरवाइज. एंड जिसकी वजह से एक चेंज के नाम से ही मेरे अंदर भीतर एक डर बसा हुआ है, क्योंकि कोई भी मुझे बोल रहा है, then automatically I feel that, oh, immediately, just observe. I have observed in me. कोई भी मेरा हस्बैंड भी छोटी सी बात के लिए मुझे बदलाव के लिए बोलेगा, मेरा बेटा मुझे छोटी सी बात के लिए बदलाव के लिए बोलेगा कि मम्मी, you have to change here. First instance is I just, energetically, not physically, energetically I step back. And it happens with all of us. Energetically, we step back because we feel fear. We feel unsafe. And that's what you all have written, that we feel uncomfortable. We feel unsafe. Whatever you have written, discomforted. And change is a constant in the universe. Of course. Accepting it happily and adapting yourself to it, the way to go ahead. Conquering your fears and overcoming them to accept the change. Beautiful, of course. But are we able to do this? See, this is, हमने सब कुछ सुना हुआ है, ये पूरा फिलोसॉफिकली जो बातें हैं ना, हमने सब सुनी हुई है कि हाँ बदलना चाहिए, सब कुछ बदल रहा है, हर एक मोमेंट में बदल रहा है, मेरे शरीर का हर एक सेल हर मोमेंट में बदल रहा है, कुछ भी वो स्टैटिक नहीं है, एवरीथिंग इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, टाइम इज चेंजिंग, बॉडी इज चेंजिंग, एवरीथिंग इज चेंजिंग, वेदर इज चेंजिंग, सब कुछ सही है, ये सारा फिलोसॉफिकल बात है. लेकिन जब कोई मुझे एक छोटी सी बात में भी बदलाव लाने को बोलेंगे, व्हाट इज माय अप्रोच? We become uncomfortable. Suresh says that first mind is uncomfortable and not ready to change, and procrastination, hesitance. So there are many ways we are not ready to change. So before we go ahead with the session, I would like all of you to just go through a small meditation, and in that meditation I invite all of you to introspect and reflect inside within you and just be truthful to yourself. This is for you, not for me, not for anybody else, and this is for you, that what is happening. And let me just go on, because awareness is healing. जब मैं मेरे भीतर जाके इसके बारे में सोच रही हूँ तो मुझे काफी अवेयरनेस आती है. एंड द मोमेंट वी बिकम अवेयर ऑफ आवर ओन सेल्फ, हमारे खुद के अंदर हमारे मन की जागरूकता आती है, तो वहां से हमारी हीलिंग शुरू हो जाती है, एंड द चेंज बिगन्स. सो let us have a small meditation, and just I invite all of you to close your eyes and take a deep breath. What am I feeling? The topic is going
Just observe your breath. Observe your breath and take a deep breath in. And just check. Check within. That what is it that I wish to change in myself right now? Since how long am I trying and wanting to change it? And just observe the energies in your body. What are you feeling in your body? What stops me to making the changes? मुझे क्या मेरे अंदर बदलाव लाने के लिए क्या रुकावट आती है? क्या मुझे रोक रहा है? What is it that is holding me back? What is it that is holding me back? What are the excuses am I making to avoid the change? Am I putting myself in the blame game because of my job, because of my personal life, because of my wife, because of my husband, because of my boss, because of my children? What are the beliefs am I carrying with me when I think about this change? That it's not possible? Is it hard to change, difficult to change? And ask yourself, do you really want to change? क्या आपको सचमुच बदलना है? Or is it because of some fears कि मुझे हेल्थ बिगड़ जाएगी, या मेरा बिजनेस में नुकसान हो जाएगा, या मेरे रिलेशनशिप में खो जाऊंगी अगर मैं बदलूंगी नहीं तो? What is your undercurrent? You really wish to change, or are you changing because of some pressure? Because your husband is giving you pressure, your mother-in-law giving you pressure, your boss is giving you pressure, and that's why you have to change. Or you are feeling helpless, that I don't have any choice, and then all the doors are closed and now I have to change. What is it? What is it? Go within and deeply ask yourself. All the answers are lying within me.
No one outside can give me answers. So where am I focusing on? On my external factors because of people, or my internal limitations because of my beliefs, because of my past experiences and memories, that I was always a failure when I tried to make any change, and now I don't want to leave my comfort zone. What is it? What is your limitation? And what am I missing when I'm not changing? मैं क्या खो रही हूं जब मैं नहीं बदल रही हूं? अगर ये मैं नहीं बदलती हूं यहां पर, तो मैं क्या खो रही हूं? What is it that am I losing here? Am I missing here? And how will be my life if I really change? How do I see myself if I really change? Visualize yourself. What will be your mindset? What will be your mind space if you really change? And just observe. Are you able to visualize your life, yourself, with that new self, with the changed self? Or is it not even possible to visualize yourself? अगर आप बदल रहे हो तो बदलने के बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी? क्या आप कल्पना कर सकते हो उसकी? So slowly and steadily, you can come back to this space and I invite all of you to write down your experience. Then what did you experience in this chat box? You can write it down in the chat box that क्या बदलना चाहते थे इतने समय से? क्या आप बदल पाए? क्या आप सक्सेसफुल थे? क्या आप सक्सेसफुल नहीं थे? अगर नहीं थे तो क्यों नहीं थे? क्या रोक रहा है आपको इस बदलाव के लिए? आपके भीतर आपको क्या रियलाइजेशन हुआ कि क्या बिलीफ आपने पाल के रखे? Would anyone like to share? You can. Whoever wants to share, they can unmute yourself or you can write it down in the chat box. And the rest of you, please keep yourself on mute. Manajit, okay. Anybody would like to share anything? Or shall we continue? Anybody? I think, Yeah, Ma. Shreya, I can't. Okay. So I feel it's holding on to beliefs that is stopping the change from happening.
Okay. And once we are ready to let go of the beliefs, then it becomes easier to change. Okay. Wow, that is great. So, what is the kind of beliefs do you think, Jaya, we have? In different areas, I would say different types of beliefs. Like, let's say in the area of money, it could be like money doesn't grow in trees. Or in the area of relationships, it could be it requires a lot of sacrifice. Mm. Or in the area of health, it could be diseases are inevitable. Mm-hmm. So these are the things that can create a lot of fear, and unless you're not ready to release such type of fears, I mean such type of beliefs, then there's always a lot of fear to change. Yeah, true. So, you gave a good example of each areas that how we have an ample number of beliefs, and because of those beliefs, we are not ready to change, and we are not experiencing the change because of the beliefs. But when I want to take any action, like for example, if you talked about money, right? I am Karina says that yes, I am a changed person because now I am able to take the things as they are. Beautiful. So when I have to first of all take some steps, like if I have to, for example, if this is the course, and I have to I feel that this has to spread, and these sessions can go wide, and people, more and more people join in. Now what may happen, that I have to take action. Maybe I have to meditate upon it, maybe I have to visualize on it, maybe I have to do a lot of marketing and do a lot of mouth publicity, maybe I have to do more on social media, right? And all of it, lot of things which I need to do. Now when this action I need to take, at that time what happens, I have to leave my comfort zone, because I have planned certain routine for myself. I have planned, and these are the extra efforts which I have to take. So every time, whenever, we are all creatures of habit. And we are, so our habits are our survival way, and we have developed certain habits in ourselves, so that the life becomes easy for us. For example, मुझे रोज पता है कि मुझे उठ के ब्रश करना है, मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे स्नान करना है, मुझे रोज पता है कि maybe I have to go to kitchen and I have to cook for my family, or maybe I have to go for my yoga, and maybe then after that I have this action and I have that action and that action. So most of the time our daily routines are almost fixed. मे बी कभी मैं बैंक में जाऊंगी, या कभी मैं मार्केट में जाऊंगी, या कभी मैं किसी दोस्त को मिलने जाऊंगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम माय schedules are fixed. So what happens is, when this habits whatever we have developed for ourselves is giving us a safety zone. जब आप, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल आपको दूं कि मुझे अगर गाड़ी चलानी नहीं आती, ओके, एंड फर्स्ट टाइम आई एम सिटिंग इन द कार, व्हाट विल हैपन, मैं बहुत अलर्ट रहूंगी ना, बहुत मुझे ये रखना पड़ेगा कहाँ है क्लच, कहाँ है ब्रेक, क्या है, कहाँ पे कभी गियर चेंज करना है. आई हैव टू बी वेरी 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 very alert and aware in that moment, right? And slowly when I will develop learning, and I know how to drive easily, what will I do? I may even talk with my friends on the phone or in the people sitting. I may sing a song and I will drive. Do I every time need to think, oh, I have to take first gear or a second gear or a third gear? If the routes are also similar where I am supposed to travel, do I always have to think, oh, signal के बाद left लेना है, right लेना है? No, because our brain is wired that way, programmed that way, that this is what I'm supposed to do. So when something new, for example, but मुझे हट के कहीं और जाना है, मेरे ऑफिस में नहीं जाना है, लेकिन आज कहीं कोई और पार्टी में जाना है जहां पे मुझे पता ही नहीं है कि वो जाना कहाँ है और रूट क्या है, then what will happen? Then I have to follow GPS. I have to make certain notes ki, okay, where I'm supposed to go. And at that time, I can't do my routine work which I used to do, all the talk and sing and fun. But now my focus is on the road, that my energies are channelizing towards
that change of route, and I'm more alert and I'm more aware. So this is how our subconscious mind is programmed. हमारा जो subconscious mind जो है वो प्रोग्राम हो चुका है डेली रूटीन करने के लिए, उसके लिए कोई एनर्जी ड्रेन नहीं होती है. एंड दिस इज अवर सेफ्टी जोन. सो वो सेफ्टी जोन में रह के हमें रोज का काम रोज करना है. माइंड इज ऑक्यूपाइड, फिजिकली वी आर ऑक्यूपाइड एंड थिंग्स आर हैपनिंग. बट अगर मुझे कुछ नया करना है, चेंज मतलब क्या? कुछ नया करना, एंड दैट इज चेंज, इजंट इट? अगर मैं रोज का रोज कर रही हूं तो चेंज का हो गया. सो कुछ नया करना वो चेंज है, वो बदलाव है. सो वो बदलाव में आई हैव नीड टू हैव फोकस्ड energies, focused attention and focused action, and then I will be able to change. अगर मैं सिर्फ चेंज की बातें करती रहूंगी तो बदलाव आना है नहीं आना है. और उसके लिए मुझे पहले तो मेरा फोकस करना पड़ेगा, एनर्जीज है फोकस रखनी पड़ेगी, अटेंशन रखना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, एंड देन कंसिस्टेंट एक्शंस. एंड बिकॉज ऑफ दैट देन the things will start changing because of the consistency of the efforts. So this is where we need a lot of energy, isn't it? And we want to play a safe game. When we want to play a safe game, we don't want to put our energies there. And that is where we are resisting for the change. We are not allowing the change to happen because कई बार हम बोलते हैं ना कि कुएं का मेंढक कुएं में ही भला, है ना. और जब हम वहां ऐसे हमारी अगर माइंडसेट है तो हम क्या करेंगे? इधर वी बिकम कंप्लीट ऑपोजिट्स. हम पूरे 4 टाइप के बिहेवियर्स रहते हैं. बेसिकली इट इज ऑल अबाउट आवर रिएक्शंस टू द चेंज, our responses to the change, our behavior towards the change. The first thing in the process of change is change your feelings about the change. The first and foremost requirement about the thing is change the way I think about change. That is the first and foremost thing. जैसे लुइस ने क्या कहा था, जब लुइस को कैंसर हुआ था तो उसने कहा कि मुझे पहले कैंसर से फाइट करने से पहले मुझे क्या करना था? सबसे पहले मुझे मेरे कैंसर के लिए जो थॉट्स है उसको बदलना था. उसके बाद मुझे कैंसर को ट्रीट करना था, whichever way I wanted to treat. But first and foremost, what are my thoughts? What are my emotions? What are my beliefs towards that? So change the way you think about the change, and that is the first and foremost thing. So यहाँ पे कई लोग हमारे लिए, कई लोगों ने chat box में लिखा, I did not read because I was speaking here. Resistance to the extra efforts required to change. Yeah, at times we ourselves resist to change. We are stuck to our old patterns. Yes, this is what we were talking about, that we are the creatures of habits, and we are so rightly that no change is needed. Yeah, lack of discipline and laziness and procrastination, also less time and energy, all this comes in the way of change. Yeah. Okay, so यहां पर हम बात कर रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज द वे आई थिंक अबाउट द चेंज. तो यहां पे मेरी शुरुआत ही वहां से हो रही है कि अगर मैं शुरुआत ऐसे करूं कि ओ माय गॉड कितना डिफिकल्ट होगा, कितना हार्ड होगा, कितना मुश्किल होगा, इम्पॉसिबल होगा, मुझे कितना सारा ढेर सारा चेंज करना पड़ेगा, कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी. एंड देन वी गो इनटू आवर पास्ट मेमोरीज एंड वी कनेक्ट विद दोस पास्ट मेमोरीज एंड वी से दैट ओ पास्ट में तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं कभी नहीं कर पाई, मैं कभी बदल नहीं पाई, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, एंड ऑल दोस बिलीव्स कम अप. And then we don't change, we don't even take the action, and यहीं पे रुक जाते हैं. तो सबसे पहले मुझे क्या बदलना है? समझो कि मुझे अगर रोज सुबह में योगा करना है या डांस करना है, सो ये मेरे रूटीन में बदलाव है, राइट? सो सबसे पहले मुझे क्या लगेगा? ओ माय गॉड, अभी तो मुझे रूटीन बदलना पड़ेगा. Oh my God, how am I going to adjust my time? How am I going to cultivate this new habit? How am I going to do this and do that? So first of all, I have to change my thoughts. So change the way you think about the change. Ask yourself. सबसे बड़ा question है. Ask yourself, why am I wanting this change?
क्यों बदलना चाहती हूं मैं? Why am I wanting to change? क्यों बदलाव चाहिए मुझे? Is it out of some pressure? Is it out of some undercurrent fears? Is it because somebody has told me and I should be changing? यहां पे हमें सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नो, I want to change, only change when you really want to change from within. Only change when you really feel empowered to change. हमारी गलती कहाँ से होती है? सबसे पहली गलती, we try to change out of pressure or out of fear, and that is what the undercurrent is. कि मैं अगर अभी ये मेरी आदत बदलूंगी नहीं तो मेरी हेल्थ बिगड़ जाएगी, मुझे डायबिटीज हो जाएगा, मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा। मैं अगर ये मेरी आदत बदलूंगी नहीं तो शायद मैं रिश्ता खो बैठूंगी। अगर मैं मेरी ये आदत बदलूंगी नहीं तो शायद मेरा स्टाफ मुझसे नाराज हो जाएगा और काम पे छुट जाएंगे। Right? So most often we are trying to change out of the undercurrent is pressure and fear and out of no choice. और जब हम, when we are trying to do that, what is happening? एक बहुत बड़ी वॉल हमारे सामने खड़ी हो जाती है, and keep resisting and keep resisting. The subconscious mind comes and keep resisting. अगर आप कुछ डाउनलोड कर रहे हो, समझो आपके कंप्यूटर पे क्या आता है, बार बार एक पॉपअप आता है, oh this is a new file, this is a new file, this is a new file, maybe check it whether you are safe or not, right? It's not, it's virus free or not, right? Same way कोई भी जब बदलाव की हम बातें करते हैं और if दो वो बदलाव प्रेशर से है, fears से है, the subconscious mind is going to try to resist you the biggest way. In the biggest way, subconscious mind is going to resist us and create turbulence in our life जहां पर हम बदलाव नहीं ला सकते हैं। तो यहां पर सबकॉन्शियस माइंड को क्या मैसेज जाना चाहिए? सबसे पहले किस तरह से हमें अभी हमारा अप्रोच बदलना चाहिए बदलाव के लिए? हाउ कैन वी जस्ट चेंज द वे वी थिंक अबाउट चेंज? क्या होना चाहिए? क्या लग रहा है? I am safe. Yes, so beautiful. Yes, Vandana. I am safe and it's safe to change. And I love myself. And that's why I choose to change. And making our environment safe that only good things are going to happen through this change. But the first and foremost thing is telling myself that I love my life and I love myself, and that's why I am gifting this change. जब लुइस ने अपने कैंसर के बारे में बात की थी तो उसने वही कहा था कि उसने सारे अपने बिलीफ्स लिख दिए थे कैंसर के ऊपर, सारे अपने थॉट्स लिख दिए थे, सारे अपने इमोशंस लिख दिए थे। So this is the things we have to do. What are we doing, जब भी हम चेंज की बातें करते हैं ना, हम ये सारी प्रोसेस करते ही नहीं है। हम बोलते हैं चलो कल से जॉगिंग शुरू, चलो कल से डांस शुरू, चलो कल से योगा शुरू, चलो कल से डाइटिंग शुरू, चलो कल से ये शुरू। अभी ये सबकॉन्शियस माइंड है जिसको एक आदत पड़ गई है, वो डर जाता है अचानक से क्या लेके आई नया श्रेया। And yes, Amrita, you can just write down your question and we will address your question. So अचानक से जो subconscious mind है वो, when you are ready for change, it seems more distance and far to achieve. Okay, yeah. So हम जो है एक तो शुरुआत भी ना करते हैं, क्योंकि इसीलिए होता नहीं है। अगर मैं कितनी बार बोलूं कि हाँ कल से तो मुझे स्विमिंग जाना ही है, बट होता क्या है, कभी हुआ है? आज तक वो कल आया ही नहीं। तो सबसे पहले मुझे जहां पे भी, जैसे कितने लोगों ने यहाँ पे बोला कि हम कब से चेंज करना चाहते हैं लेकिन हम पोस्टपोन करते रहते हैं, हम अवॉइड करते रहते हैं, वी आर रनिंग अवे, वी आर इग्नोरिंग, we are becoming lazy, and it is because we have not done the process. Amrita, even for your question that when you are ready for the change and still the change is looking at very far, because we have not done the process before we begin for the change journey of change.
So what are my thoughts around change? Have I written that? What are my, have I journal? See, journaling is very, very important and very powerful. So if I am thinking that yes, I want to change my habits, or I want to create something new in my life and I have to change, then first of all I have to write down, journal all my beliefs about change. What will happen if I will change this? What will not happen if I will not change this? What are the emotions I am experiencing? And what emotions can I change? So, first and foremost, change the way you are thinking about the change. And in that process, write down all your thoughts, all your emotions, and all your beliefs around whatever you are planning to change. All your fears, and feel it in your body. Feel it in your body. And then you ask yourself, oh, is this so? Why we did the meditation today? Right? We did the journey of meditation. Why? Because I wanted you to experience that this is what my fears are. This is what my beliefs are. Write it down. Process it. Release it. अगर आप लोगों को याद है तो हमने लास्ट फ्राइडे उसी के ऊपर बात की थी कि हाउ टू मैनेज योर इमोशंस. सो हम जो है, ये जो चेंज है, इट्स अ वेरी इमोशनल, इट्स नॉट फिजिकल. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इट इज इमोशनल चेंज जो है. इट हैज अ इमोशनल चेंज, क्योंकि आप अपने रूटीन को ब्रेक करके कुछ नई चीज डेवलप करने जाते हो, और जहां पे अंदर बहुत सारे इमोशंस ऊपर नीचे हो रही है, एंड वी हैव नॉट एड्रेस्ड दोज इमोशंस, वी हैव नॉट एड्रेस्ड अवर ओल्ड बिलीव्स, एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू प्लंजिंग इनटू चेंज. Then how are we going to experience the change, and how are we going to have the change feeling easy? So first and foremost, very, very, very important foundation is write down all your feelings, all your thoughts, all your beliefs around change. What am I going to feel, and what am I going to feel? What if I will drop my old habits, what will happen and how will I feel? What if I will develop and cultivate a new habit, what will happen and how will I feel? तो मैं हिंदी में यहाँ पे बताऊंगी, किसी ने रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज हिंदी में भी बोलो. सो वापस आई एम गोइंग टू रिपीट दैट हम हमेशा चेंज के बारे में जब बातें करते हैं तो सीधा हम प्लंज कर देते कि कल से डाइट शुरू कर देंगे, कल से मैं ये करूंगी, कल से मैं वो करूंगी, कल से मैं ये करूंगी. सीधा एक्शन पे आ जाते हैं. But we are not addressing our subconscious mind, we are not addressing our emotions and beliefs. हम उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं कि मेरी ये पुरानी, चलो माना कि आपको बदलाव लाना है, अंदर से महसूस हो रहा है कि अभी मुझे बदलाव जरूरी है. सो पहले, सबसे पहले अपने भीतर जाके देखिए और अपने आप को 50 बार पूछिए कि मुझे क्यों बदलना है. ये चीज आप रोज 50 बार पूछिए कि मुझे क्यों बदलना है, मुझे क्यों बदलना है, मुझे क्यों बदलना है. क्या ये बदलाव मैं कोई डर की वजह से लाना चाहती हूँ? क्या ये बदलाव मैं कोई प्रेशर में लाना चाहती हूँ? या मैं ये बदलाव इसीलिए लाना चाहती हूँ बिकॉज आई लव माई सेल्फ एंड आई लव माई लाइफ, एंड इसीलिए मैं अपने आप को इतना प्रेम करती हूँ और इसीलिए मैं बदलना चाहती हूँ. तो ये जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो हम मिस आउट कर देते हैं. सेकेंडली, हमें वो लिखना है कि ओके, अभी मुझे पता चल गया कि मैं बदलना चाहती हूँ एंड आई लव माई सेल्फ एंड दैट्स व्हाई आई चूज दिस चेंज एंड आई गिफ्ट माई सेल्फ दिस चेंज. देन व्हाट आर माई थॉट्स अबाउट माई ओल्ड हैबिट्स? क्या होगा अगर मैं मेरी ओल्ड हैबिट्स जो है उसको मैं ड्रॉप डाउन करूंगी, तो क्या लग रहा है मेरी फीलिंग्स? Am I going to miss something? Am I going to, going into uncertain? Because many a times change are uncertain, changes are unclear, you can't see clearly. So उस समय पे मुझे क्या डर लग रहा है कि अगर मैं मेरी पुरानी आदतें छोड़ दूंगी तो मुझे क्या डर लग रहा है? मुझे सेफ लग रहा है मेरी पुरानी आदतें छोड़ दूंगी तो क्या फील हो रहा है? राइट डाउन अगेन ऑल योर बिलीव्स, ऑल योर इमोशंस, राइट डाउन. और उसके बाद मैं वो भी लिखूंगी कि अगर मैं नई आदतें कल्टीवेट करना चाहती हूँ तो भी मुझे क्या डर लग रहा है.
और मुझे क्या इमोशंस महसूस हो रही है और मुझे क्या मेरे बिलीव्स महसूस हो रहे हैं। जब मैं उस चीजों पे फोकस करना शुरू करती हूँ, आई स्टार्ट जर्नलिंग डाउन, नॉट ओनली मेंटली थिंकिंग but journaling down my old habits and my old beliefs and old emotions and old behavior, and I journal down about my new habits, mere new emotions, new behavior, and then I tell myself that yes, now out of from the space of love I am choosing this change, and that is so very much important. बिकॉज अब तक जो हमने फियर और प्रेशर की वजह से, या मैं सोसाइटी में क्या बताऊंगी उसके बारे में मैंने चेंज के ऊपर सोचा और चेंज के ऊपर सीधा अप्लाई कर दिया, ये अगर हम रिसर्च करके अपने आप को बताते हैं तब जाके हमें चेंज, बदलाव हमारे लिए आसान हो जाता है, बदलाव होना लगता है. सेकेंड थिंग, सुमिता, यू हैव अ क्वेश्चन एंड यस आई विल कम टू यू. थोड़ी समय रुको, जस्ट लेट मी फिनिश व्हाट आई वांट टू टॉक एंड देन आई विल कम टू यू. सेकेंड थिंग, हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट है कि छोटी छोटी बातों में सेलिब्रेट योर सक्सेस मोमेंट, विन मोमेंट्स. जहां पे अमृता वो कह रही थी कि बदलाव मैंने सोच भी है, मैं चूज भी कर रही हूँ, आई एम वर्किंग ऑन माई चेंज बट स्टिल इट इज लुकिंग फाइन, आई सी माई सेल्फ फार अवे. क्यों? रोज जो छोटी छोटी विन मोमेंट्स है ना, उसे सेलिब्रेट करना है. क्योंकि अगर वहां पे हम सेलिब्रेशन करेंगे देन वी फील वाओ यू डिड इट श्रेया, यू डिड इट. भले मैंने रोज सोचा, क्या होता है कई बार, समझो कि मैंने सोचा कि मैं 1 घंटा वॉक करूंगी और मैंने 1 घंटा वॉक नहीं किया, शायद आधा घंटा या 20 मिनट ही वॉक किया. एंड देन व्हाट विल आई हैव, व्हाट विल आई डू? जनरली मेरा फोकस कहां पे रहेगा? ओ यू थॉट, लुक एट यू श्रेया, यू थॉट तुम 1 घंटा वॉक करोगी और तुम क्या कर रही हो? तुम तो आधा घंटा ही वॉक कर रही हो. What happens? We start criticizing ourselves and we don't appreciate our own self. At that time, we have to be our own cheerleaders and tell yourself that, wow, I know you have committed for 1 hour, but you at least walked for 20 minutes, you at least walked for 30 minutes, and I'm so proud of you. And हाँ, हम कल और भी कुछ कर सकते हैं, हम और भी कुछ कर सकते हैं, हम और भी आगे बढ़ सकते हैं. एंड लेट्स डू इट टुगेदर. You have to bring your inner child with you and make this change a celebration, make this change as a fun and exploration. बट हम वो नहीं कर रहे हैं ना, अब तक वो प्रेशर में कर रहे हैं और अपने आप को जैसे कि कोई बड़ा टास्क देके, हमारे लिए चेंज क्या है, जैसे कि हम लोग 10-15 किलो का पत्थर अपने पीठ पे कैरी करके वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन इट एंड देन इट डजंट वर्क बिकॉज यू फील इट हैवी, यू फील बर्डन्स. सो यहाँ पर हमें सबसे पहले छोटी छोटी बातों में हमारे विन मोमेंट्स को हमें सेलिब्रेट करना है डे टू डे. एंड व्हेन वी आर अगेन गोइंग एंड कनेक्टिंग विथ अवर चाइल्ड दैट वाओ श्रेया यू डिड इट एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू एंड नाउ लेट्स डू इट टुमारो आल्सो एंड लेट्स डू इट टुमारो आल्सो. टेक 1 day एट अ टाइम. हम जो है ना यहाँ पे 1 day एट अ टाइम भी नहीं लेते हैं. हम तो वो सोचते हैं कि ओ सीधा अगर मैं 70 किलो की हूँ तो 50 किलो पे कब पहुंचूंगी, जिस दिन 50 किलो पे पहुंचूंगी तब जाके मैं सेलिब्रेट करूंगी और डांस करूंगी. सो टेक 1 day एट अ टाइम. 1 day, when you are taking 1 day at a time, then it becomes easy. And every day we can celebrate life. Every day we can have our win moments. And before you go to bed, please, please, please do write your 3 win moments. That is so important because you are going with those vibrations of victory. You are going those vibrations of joy that you have done something, you have achieved something. अब तक क्या था पता है, सबकॉन्शियस माइंड को हमें छोटा बनाने की एक आदत सी पड़ गई थी. देख श्रेया, तू तो कुछ सोचती है लेकिन कुछ करती नहीं है, या जो करती है वो भी आधा अधूरा करती है. तो सबकॉन्शियस माइंड को हमें छोटा बनाने की एक आदत सी पड़ गई है. तो जब यहाँ पर सोने के समय पे जितना भी मेरे से हुआ, 10%, 20%, 30%, 50%, जितना भी हुआ उसके ऊपर मैंने उसको सेलिब्रेट किया और अपने आप को प्यार किया कि वाओ दिस इज अमेजिंग.
Use the words wow, use the word amazing. Wow, this is super duper great, Shreya. You are doing amazing work. You have to use this kind of words and write it down before you go to bed. मतलब आपको नींद आ रही है, आपको ये लिखना है और फिर सो जाना है. Then now the subconscious mind starts preparing a new program that wow, Shreya is now becoming successful in her change. And this is how with we rewire our subconscious mind with new programming that yes, Shreya can also change, and I can also change, and I can also change, and I can also change. And then we feel that change is easy, change is fun, change is easy, change is fun. I'm ready to change, I'm ready to change, I'm eager to change, I'm ready to change, I'm eager to change, I'm ready to change. Change is easy, change is fun. So हम ये गाना तो जरूर गाएंगे, उसके पहले हमें कुछ लोगों के क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को हम जरूर सुनना चाहेंगे. सुनीता, you have a question. And I hope that Amrita, I have answered your question, fear of unknown, because mind has adapted to the comfort of the present stress. Yes, Pegasus, Suresh, human beings' basic nature is laziness. We have to restart every time and should motivate ourselves. There is a tendency to stop. Okay, fine. Anybody wants to ask anything? Somebody wanted some question to be asked. Where is that Sunita? Sunita, you had some question. Sunita, you can unmute yourself and you can ask the question. Are you there, Sunita? Okay, so let Sunita come. If she is, maybe her questions are not more, no more the questions are remaining, and maybe she has got the answers. Okay, so anybody would like to share their comments, whatever their insights, whatever they are taking today. Anybody would like to share that? मैं चाय सुबह छोड़ना चाहती हूँ. Sorry, चाय आप जोर से बोलेंगे, मुझे सुनाई नहीं दिया. मैं चाय टी छोड़ना चाहती हूँ. और मैं जो लिखूंगी मैंने वो हेल्थ के लिए प्योर है ना, तो ऐसा नहीं अगर लव मैं सेल्फ लव के लिए छोड़ना चाहती हूँ, ऐसा बोलूंगी. ओके, राइट. सो जो आप चाय छोड़ना चाहते हो और अपने सेहत के लिए जो अच्छा है उसको अपनाना चाहते हो तो जरूर कीजिए, बट उसके पहले अपने जो भी जैसे हमने बातें की सारी इमोशंस को लिख दीजिए कि मेरे फियर्स क्या है, चाय पीने से मेरे फियर्स क्या है और चाय छोड़ने से मेरे फियर्स क्या है, एंड देन रिलीज ऑल द फियर्स बिफोर यू बिगिन विद एनी वर्क. लास्ट, अगर आपको पता नहीं है रिलीज टेक्निक्स के बारे में, हमने लास्ट सेशन में रिलीज टेक्निक्स के बारे में भी बातें की है, गो थ्रू दैट सेशन. बट जहां पर आपको पहले जो भी वो नेगेटिव एनर्जीज, जो टॉक्सिक एनर्जीज है, उसको रिलीज करना है बिफोर यू बिगिन विद एनी चेंज, बिफोर आप अगर चाय छोड़ना चाहो. और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन और शेयरिंग योर ओपिनियन. देखो, कई लोग होते हैं कि मुझे चाय छोड़नी है, मुझे सिगरेट छोड़नी है, मुझे अल्कोहल छोड़ना है, और ओवर अ नाइट होता नहीं है कई बार. सो कैन वी जस्ट बिगिन कि ओके मैं रोज एक सिगरेट पीती हूँ, उसकी बजाय इतनी सी सिगरेट पीऊंगी, या उसके बाद में धीरे धीरे मैं आधी कर दूंगी, और बाद में धीरे धीरे 1/4 कर दूंगी, और मैं धीरे धीरे और कम करके 0 पे आ जाऊंगी. बट ये जो ऑल ऑफ अ सडन हम सीधा करते कि कल से जैसे कल की सुबह हुई और मैंने सिगरेट को अलविदा कर दिया, मैंने चाय कॉफी को अलविदा कर दिया, तो जब हम यह करते हैं तो क्या होता है कि सबकॉन्शियस माइंड अचानक से डर जाता है, घबरा जाता है, ये क्या हुआ, डेंजर 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 डेंजर. एंड देन हमें हेडेक होना शुरू हो जाएगा, हमें हेल्थ इश्यूज होना शुरू हो जाएगा, हमें और कोई तरीके ऐसी चीजें आएगी कि वापस हम उसको अपनाना शुरू कर देंगे. तो हमें जो है सबकॉन्शियस माइंड को है, सी सबकॉन्शियस माइंड इज ऑल फॉर अस. सबकॉन्शियस माइंड को एक प्रोग्राम वो हुआ है कि अंजलि चाय के बिना हेल्दी नहीं रह सकती, या अंजलि चाय नहीं पिएगी तो सर दर्द हो जाएगा, या अंजलि को ये हो जाएगा वो हो जाएगा. सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रोग्रामिंग है. तो सबकॉन्शियस माइंड आपको डराता क्यों है? क्योंकि आपको वो सेफ रखना चाहता है कि अंजलि हंसती रहे, खुश रहे और चाय पीती रहे.
right? So subconscious mind tries to protect us, but हमें क्या करना है? हमें वो करना है कि सबकॉन्शियस माइंड को बोलना है कि अरे तू तू चिंता मत कर, आई एम सेफ। और हमें इसीलिए सीधा एक कप चाय की बजाय आधा कप कर दो, 1/4 कप कर दो, धीरे धीरे क्वांटिटी कम करो, एंड देन यू टेल योर सेल्फ दैट नाउ आई कैन लिव विदाउट, इवन विदाउट टी, and I'm feeling, because I love myself, now I'm choosing this. And before that also again I'm repeating कि अपने सारे fears लिखो, बहुत जरूरी है। चाय पीऊंगी तो क्या होगा, चाय नहीं पीऊंगी तो क्या होगा, सारे fears लिखो और fears को अलविदा करो, release it with love, 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 all those energies। हम लोगों को ये सारी आदतें जो पड़ी हैं, because we are carrying those energies in our energy pot, energy fields, and इसीलिए ये सारी चीजें ये जो है हमारी एनर्जीज को सपोर्ट करिए। नाउ वी हैव टू रिलीज दिस एनर्जीज। सी इजंट इट वी आर बिकमिंग, इट्स लाइक क्लचेस, कि वो क्लच के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती हूँ, वो मुझे चाहिए, वो चाहिए। एक कप चाय सुबह में उठी नहीं तो मेरा दिन, उठते ही मुझे मिली नहीं तो मेरा दिन बिगड़ जाता है। कई लोगों की ये एक माइंडसेट है, राइट? सो हमने उसको क्लच बना दिया है, हमारी सारी आदतों को। हमें उसको धीरे धीरे प्रेम से छू, राइट? I have seen abrupt changes also happening successfully, specifically about our habits. Some incidents force you to, and some defined incidents make that happen, and it becomes a habit over a period of time. Yes, good. Sometimes, see, there are two types of changes: unexpected changes and expected changes. Expected changes is sometimes you choose to marry, you choose to become a parent, you choose to change your job, you choose to change your country, and with a proper programming, things you are planning to change, and then you are feeling very good about it, you are excited, you are feeling great about it, you are enjoying that change. So there is expected change, and you are willing to change. See, that change has come from within. Yes, I'm ready for marriage, I'm ready for marriage, I'm ready for a life partner, and then you are going for a life partner. So that, of course, life is going to completely change. But yet, because mentally your subconscious mind is prepared, you are prepared, and you are going for it. But there are somewhere there are unexpected changes. Unexpected changes मतलब फैमिली में किसी की डेथ हो जाना, unexpected pregnancy where you are not planning and you will get the news that you are pregnant, unexpected covid आ गया हमारी सबकी लाइफ में, unexpected disease आ गई, और हमें उस समय पे हमारे लिए कोई walls खुली नहीं है, then we are many a times we are operating out of no choice zone. I don't have choice and now I have to accept this, and we operate from that no choice zone, and then we adapt that change कि अभी तो कोई choice है ही नहीं, so the only way is to adapt the change peacefully, and then we adapt the change. So sometimes it works, sometimes it triggers back and it bounces back after some time. See, like, for example, I'm telling you that ये मेरा experience रहा है regarding weight management. I will not use the word weight loss, but I will use that weight management. And many a times, like, we feel कि wow, I did it, अभी तो मैं 60 से 50 पे पहुंच गई, wow, I did it, और पूरा मेहनत करके, 1 साल मेहनत करके, पूरा तामझाम करके, सारा डाइटिंग ये वो करके सब कुछ कर लिया, right? And we get even the results, fine, beautiful, but after some time we see that again 50 का वापस 70 पे पहुंच गया. And why this is happening? Because we did not work. Because Louise हमेशा कहती है, पता है, even weight management, she says that it's not dieting from the food, it's dieting from your emotions, dieting from your belief system, dieting from your thoughts, and that is most important. So अगर मैं उसको हैंडल नहीं करके सीधा चेंज, चलो बदलो, और मैं उस पर कूद पड़ती हूँ पूरी ये लेके, ड्रम लेके पूरा, अच्छी बात है, but how long will it sustain, or will it bounce back? So if we want to make our journey sustainable, long-term sustainable, and if we choose to make it easy, then this is, if we try this process, all of you can try this process, and then you can also update me that what was your experience about it. So Semia is saying that try hard to change the habits which are not good or harmful, but again and again give excuses. So I would like all you to please try it
and then see what happens. Sorry, I'm not able to feel disease. More thoughts of disease come. My daughter fears disease. More thoughts of disease come. Yeah. So जितना हम जिसी के बारे में इससे सारे जो fears है is going to multiply. आप कोई भी चीज में fears की वजह से आप कंट्री छोड़ दो, fears की वजह से आप डिवोर्स ले लो, fears की वजह से आप डाइटिंग करके हेल्थ पे काम करो, fears की वजह से आप कोई भी चीज करो, fears are going to bounce back in multiples. So anything, any change you have taken out of fear is not going to help us. It's not going to be sustainable. And that's not the way to change. Yeah. Sunita, you have some question. यस मैम. हाँ, मेरा उस समय नेट चला गया था, इस वजह से नहीं पूछ पाई मैं. आपने मेरा नाम लिया था. वो मैं यही जानना चाह रही थी कि अगर हेल्थ इशू है तो जैसा आपने बोला कि फियर से हमें शुरू नहीं करना चाहिए, तो अभी अभी आपने इसका आंसर दिया, तो हेल्थ पर थोड़ा सा इसका बताएं. फियर से क्यों नहीं शुरू करना चाहिए कि अगर मेरी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगी? या बताएं आपको, हम जब छोटे थे ना तो हमको डरा धमका के सब कुछ किया जाएगा. तुम खाना नहीं खाती हो तो तुम बीमार पड़ जाओगी, तुम्हें सर्दी हो जाएगी, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और डॉक्टर के इंजेक्शंस लेना पड़ेगा, या तुम इतनी लेजी हो तो तुम मोटी हो जाओगी, तुम्हें सब लोग मोटी करके चिढ़ाएंगे तो तुम्हें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी. तो बचपन से ही हमारे पेरेंट्स ने हमें बदलने के लिए क्या टेक्निक यूज किए? फियर्स एंड ओनली फियर्स. और क्या आपको लगता है बिल्कुल कि सचमुच जो बच्चों में बदलाव आता है? वो बच्चे डर के मारे पेरेंट्स का सुनेंगे, पर वो जबरदस्ती कर रहे हैं, आउट ऑफ प्रेशर कर रहे हैं. एंड fear and incentives also. एग्जैक्टली, वेरी ट्रू. यस, वेरी वेरी ट्रू. कि हाँ चलो तुम्हें हम पिकनिक पे लेके जाएंगे, तुम्हें आज तुम वीडियो गेम मिल जाएगा, तुम बदल लो. और फिर वो बच्चों को क्या आदत पड़ेगी पता है? बदलाव तब लाएंगे जब कुछ मिलेगा. बाद में वो बच्चे, वही बच्चे जॉब करेंगे तो बोलेंगे अगर मुझे बोनस मिलने वाला है तो ही मैं अच्छा परफॉर्मेंस करूंगा, नहीं तो मैं काहे को परफॉर्मेंस करूं. वो आदत पड़, हमें वो आदत पड़ जाती है कि अगर मैं इसीलिए परफॉर्म करना चाहती हूँ, अपने आप को प्रूव करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे नाम मिलेगा, फन मिलेगा, ग्लोरी मिलेगी, एवरीथिंग मुझे मिलेगा, पैसा मिलेगा. So, don't you think that a child's volatile mind, which is so volatile, which changes so fast, is it not the incentive part? Is it not required in the beginning stages of early child's life, the incentive stage? Because we all tend to do it as parents. Almost everyone tends to do it, and sometimes it helps, sometimes it doesn't. Yeah. But as in when a child grows up, maybe they become better understanding at things. We might try to put our own thoughts into them in a better manner. So the changing, adapting things of a child as and when they grow, the way we actually treat them and way we actually handle them also changes. So isn't incentive a good way in the beginning, in the formative years of a child? According to Louis, this is love. Sorry? According to Louis Hay, it's just pure love and no business. And if we are using intensive incentives, then we are doing a business. So choice is yours. हेल्थ के बारे में बताएं, फियर कैसे काम करेगा हेल्थ के बारे में? हाँ, तो यही बात हम, मुझे थोड़ा हेल्थ इशू है वो. हाँ, मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं वही कह रही कि हमें सबसे पहले हमें डरना नहीं है कि ओके, आई अंडरस्टैंड, एक्सेप्टेंस में आना है. एक्चुअली मैम मेरा डर ये है, मेरा डर ये है कि मैं 50 ईयर की हूँ और मेरे को थोड़ी एलर्जी सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की. तो मैं बढ़ती एज में इस अस्थमा के साथ नहीं जाना चाहती हूँ, इसलिए ये मतलब मेरा सबसे बड़ा फियर है. सही बात है. देखो, अगर आप मेटाफिजिकल वर्ल्ड में आते हो तो मेटाफिजिकल वर्ल्ड कहते हैं कि आपकी लाइफ में आप जो भी अनुभव कर रहे हो ना, वो सारा बिकॉज ऑफ द इमोशनल बैगेजेस. हम फाइट करना चाहते हैं हमारी हेल्थ को बदल के, या शुगर पिल्स लेके, या मेडिकल पिल्स लेके, या वॉक लेके, हम सारे इमोशंस को डील करना चाहते हैं. बट
जो आपको जो भी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, इट कैन बी अ माइग्रेन, इट कैन बी अ हार्ट पेन, इट कैन बी नी पेन, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ पेन और एनी काइंड ऑफ डिजीज, इट इज पूरा सारा उसका कारण है वी आर कैरिंग इमोशनल बैगेजेस इन आवर माइंड, इन आवर बॉडी, एंड बॉडी के हर एक सेल में ये इमोशंस भरी पड़ी हुई है. हम उस काम नहीं कर रहे हैं, वो इमोशंस को हम रिलीज नहीं कर रहे हैं, और हम सिर्फ करना क्या चाहते हैं कि चलो थोड़ा वॉक ले लो, या चलो थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, या प्राणायाम कर लो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लो, योगा एक्सरसाइजेस कर लो, तो मेरे अस्थमा का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो मेरा डायबिटीज सॉल्व हो जाएगा, तो मेरा ये सॉल्व हो जाएगा. सब करना चाहिए, उसके लिए मना कुछ नहीं है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आर वी ट्रीटिंग अवर माइंड, अवर इमोशनल बैगेजेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप जो हेल्थ की बात कर रहे हो, अस्थमा की बात कर रहे हो, अगर जो भी आप मुझसे पर्सनल कोचिंग लोगे, तो आई विल टेक यू एट अ डीपर लेवल at emotional baggages, that what are the emotional baggages you have to clear first. जो आप डर अब अभी डर से बात कर रहे हो कि मैं ये कैरी करके आगे की लाइफ जीना नहीं चाहती हूँ और आगे बढ़ सकता है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू रिलीज ऑल द फियर्स, क्योंकि मैं फियर के मारे जब ये बदलाव लाना चाहती हूँ, वो बाउंस बैक करेगा और अस्थमा अटैक्स बढ़ सकते हैं. सो इसीलिए जो भी आप बदलाव लाना चाहो, बहुत ही अच्छी बात है, बट नॉट आउट ऑफ फियर, नॉट आउट ऑफ प्रेशर. दैट इज द बेसिक फंडामेंटल नीड, जो आज तक हमें किसी ने बताया नहीं है, शायद सजेस्ट नहीं किया है कि प्लीज don't change because you love your life and love your change, and release all these fear energies, release all these beliefs energies which are heavy and toxic, which is the most important step. वो मैं पिछली बार आपकी इमोशन रिलीज की क्लास में अटेंड नहीं कर पाई थी, तो तो थोड़ा सा ब्रीफ में बताएंगे इमोशन. अभी तो मैं नहीं बता सकती बिकॉज इट इज ऑलरेडी द टाइम इज ओवर, 8:40 होने वाली है. आप मेरा वो यूट्यूब का वीडियो देख लीजिएगा, लास्ट टाइम का है, इट इज यूट्यूब पे है, और यही फ्राइडे फिएस्टा ग्रुप को आप स्क्रॉल करके जाओगे तो नीचे है लास्ट टाइम का वीडियो, अब यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट. ठीक है. या यू हैव सम question when you want to change yourself and everything around you is not working out, pulling you down, mostly trusting this universe for things to happen. How does that translate to the practical behavior on the ground? Wow, you have lots of questions. I have seen abrupt changes also happening successfully, especially about. Okay, fine. So मैम थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ही रिलैक्स फील कर रही हूँ, बहुत बहुत थैंक यू. थैंक यू. आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं और हम और बातें कर सकते हैं, सुनीता. या सो yeah, you have any other question? Anybody has any other question? I have a question, please, if we have time. Yeah, please. There was a mention earlier that start loving the I think I'll rephrase this. The thing that you're fearing the most, see it with love and you'll see the changes. But what if that feeling comes from a lot of hurt, cheating, violation, trauma? How can we, what kind of love can we possibly have for that experience to move on from there? True. So what is my first job before loving it? What is my first job? Accepting it. Job is to acceptance. I mean, just guessing. Acceptance of the experiences, whatever trauma, whatever experiences we had, acceptance of those experiences, journal it down and journal all the feelings which you have experienced through those experiences. So journal down all your emotions. We all are emotional beings. At the end of the day, emotions are governing our life. And if we are not handling and managing our emotions wisely, we are going to feel victim. So we have to first journal down all the emotions and release it with love. That thank you for coming in my life, for teaching me certain lessons. And now I choose to release you because I love myself. And because I love my life, I choose to release all these emotions. And release all these emotions, and then you embrace the change. Then you embrace the acceptance also that this is what it is. And I choose a better life, a better behavior. Okay, thank you. Thank you so much. Yeah, so before we end the session, so let's sing. Are you all ready? Yeah,
So let's start singing. Change, change, easy to change. Change, it's easy to change. Change, it's easy to change. Change, change, say, Easy to change, it's easy to change. It is easy to change. I'll just first I will sing and then you repeat. Then it will become easy for everyone to follow. Okay. So first I will begin and then you follow me. So change, change. I'm ready for change. Change, Change, I'm ready for change. change, 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 I'm ready for change. change, change. I'm eager to Ready change. for change. Change, change. I'm Change, open. I'm eager to change. Change, change. Change, I'm open to change. Change, change. I feel Change, to ready to change. change, change. I feel safe to change. Change, change, change. Ha ha ha. Change, change, change. Ho ho ho. Change. Ha ha ha. Change, change, change. Ho, ho. Change, change. Change, Happy as I change. Change, change. I'm happy as I change. Change, change. I love to change. Change, change. I love to change. Change, change, change. Ho, ho, ho. Change, change, change. Change, change. Ho, ho, ho. Change, change, change. Change. It's easy to change. Change, change. It's fun to change. Change, change. I'm safe to change. Change, change. It is safe to change. Change, change. I'm growing as I change. Change, change. I'm growing as I change. Change, change. I'm ready to change. Change, change, change. Ha ha ha. Change, change, change. Ho ho ho. Change, ho ho ho. Change, change. I'm ready to change. I'm changing every moment. It's easy to change. I'm changing every moment. It's fun to change. I'm changing every moment. It's safe to change. I'm changing every moment. I'm growing as I change. Change, change. It's easy to change. Change. It's safe to change. Change. I love to change and I love to change and I love to change and I love to change. Yes, thank you, Amrita, for being from Melbourne, Australia, and it's 1:11 a.m. there. And thank you that still you are with us in the session. Thank you so much. That shows your commitment, that how much you are ready for the change. Thank you. I'm so glad I came today, and I think just what I needed to hear. And the meditation was phenomenal. It just got me back to my balance that I was desperately needing. Thank you so much for having this for us. Right. And if you all are still ready, then we can invest 5 more minutes and have one more meditation before we leave. So if people are feeling that they have some other commitments, they can leave. And people who can be here for another 5 minutes, then continue and let's have a small meditation. Taking a deep breath in, breathing in and breathe out. गहरी लंबी सांस। Let us thank to the divine within. उस प्रभु को, हमारे भीतर बसे हुए उस परम आत्मा को हम धन्यवाद करेंगे कि आज हमें इतना सुनहरी मौका मिला. We can go within, we could go within and we could introspect.
हम अपने आप को भीतर से जान सकें, हमारे डर को पहचान सके, and we could face our fear head on. Thank you, my divine. Thank you, my divine. Thank you, my divine. Let us open our hands. Don't keep your hands closed. Open both the hands, facing your palm to the sky. And let us absorb the energies. जब हम तहे दिल से प्रेम के द्वारा कि मैं अपने आप को बहुत प्रेम करती हूँ, मैं अपने जीवन को बहुत प्रेम करती हूँ, और उस प्रेम के माध्यम से इस ब्रह्मांड में जब हम डिक्लेयर करते हैं, घोषणा करते हैं कि हाँ, मैं बदलने के लिए तैयार हूँ, हाँ, मैं बदलने के लिए तैयार हूँ, हाँ, मैं मेरी सोच बदलने के लिए तैयार हूँ, हाँ, मैं मेरे विचार बदलने के लिए तैयार हूँ, हाँ, मैं मेरी एनर्जीज बदलने के लिए तैयार हूँ, हाँ, मैं मेरी हैबिट्स, मेरे बिहेवियर्स बदलने के लिए तैयार हूँ, हाँ, मैं मेरी जीवन धारा बदलने के लिए तैयार हूँ। जब बड़े प्रेम से अपने आप के साथ जब हम इतना प्रेम करें कि हम बदलने के लिए उत्सुक बन जाएं, we become eager, और वह उत्सुकता से, वह बच्चे की तरह क्यूरियोसिटी से हम जब ब्रह्मांड में घोषणा करते हैं इस बदलाव की, तो पूरा ब्रह्मांड की सारी ताकत, सारी शक्तियां हमारे साथ जुड़ जाती है हमें इस बदलाव में सहयोग देने के लिए। The whole universe comes in our favor and the whole universe starts playing in our favor. चाहिए तो सिर्फ प्रेम, because I love my life and because I love myself. I choose this change. I gift myself this change. और यही प्रेम के साथ इसी समय हम कुछ तय करेंगे कि आज मैं क्या बदलना चाहती हूँ। आज से मैं मेरा कौन सा स्वभाव मुक्त करना चाहती हूँ या उसमें बदलाव लाना चाहती हूँ। What do I choose to drop in my daily habits and behaviors? Slowly and steadily, drop by drop. Drop by drop we create an ocean, drop by drop. Making friends with our subconscious mind. हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हम बताएंगे कि बदलाव आसान है, एंड चेंज इज फन, बड़ी मजा आती है। चेंज इज फन, चेंज इज फन, चेंज इज फन। Change is an opportunity to grow in life. And I'm ready to change, and I'm open to change. Thank you, my divine. Thank you
for gathering all the beautiful souls here. Thank you for gifting all of us the strength, the courage, the determination, the dedication which requires for change. Thank you for showering all your grace, all your love on all of us. And take a deep breath and absorb and assimilate all these energies. And the whole universe trust that, trust, and trust. Change comes only with trust, trusting ourselves, believing in ourselves. Trusting myself, trusting the universe, trusting the process of life. I am safe and secured. Life is beautiful now. World is beautiful now. पूरी श्रद्धा और विश्वास से हम अपने आप को प्रेम से इस कुदरत के हवाले, उस परमात्मा के हवाले सरेंडर करते हैं, समर्पण करते हैं. And I am ready for the change. I am ready for the magic. And I am unstoppable. And universe, I completely surrender to you. जिस पल में मुझे जो भी तुम देना चाहते हो, everything is coming to me at the right time, in the right speed, at the right place, in the right sequence. And in complete patience, I believe and I trust to this universe. Whatever I need for my growth is coming to me easily and effortlessly. Whatever is coming, whatever I need for my growth, for this change, is coming to me easily and effortlessly. और इसीलिए शायद आप इस सेशन में भी हो. Whatever I need to know and whatever I need to change, all the help is coming to me easily and effortlessly. Thank you. Thank you. Thank you, and I love you all. I love you. 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 Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you for a lovely session. Thank you, Shreya. It was amazing. Absolutely amazing. Thank you, Shreya. God bless you. Thank you, and I love you. And I Thank love you all. you. We also Love you love too. you. Ma'am. Thank you. Thank Love you, you ma'am. too. Thank you. And I also invite all of you to Thank you, join ma'am. today Heal Your Life workshop, which is coming next weekend, Saturday and Sunday. And I really invite, it will be real fun, really a life transforming experience when you join for this 2 days workshop. So whoever can come and attend physically, it's a physical workshop. It's not an online workshop. It's a physical workshop because the energies are so contagious and vibrant that one has to experience those energies, absorb those energies. So transformative energies. So whoever is planning and whoever is the chosen one will definitely choose this workshop. And I love you all. Love you, and I thank you. Thank you so much. Happy to see all of you We again. also love you. Bye, Shreya. Good night. Bye. Thank you. Bye. Bye, Thank Shreya. you. Bye. Bye. Bye, and love you all. Good night. Bye-bye. Bye.